Professor Muni. JNU ना आपको रास आती है ना मोदी जी को रास आती है। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। 5 जनने को भी हाँ? 5 जनने को भी। और इसीलिए जब और कुछ हल नहीं निकलता तो JNU पे थोप दीजिए और जो JNU अच्छा काम करती है उसको भूल जाइए। आपका सारा सरकार, आधे से ज्यादा सरकार JNU बैठा हुआ है। आपके संसद में JNU बैठे हुए हैं और ये मोदी जी की RSS वाली कहती है कि JNU एंटी नेशनल है। तो ये भी बैठी हुई है उधर ही। हाँ, टेरर हब है और एंटी नेशनल हब है। तो इनसे पूछिए कि ये सरकार कैसे चलेगी। जयशंकर को हटाइए, वो तो JNU से आता है। निर्मला आपकी मंत्री है। निर्मला मेरी रिसर्च असिस्टेंट थी बाय द वे। तो छोड़ दीजिए, आप JNU को माफ कीजिए और नेपाल पे आइए। ये भी सही बात है। देखिए, मैं सुनने आया था, मैं बोलने नहीं आया था। मुझे कहा भी नहीं गया था कि आपको बोलना है। मुझे 24 घंटे पहले नोटिस था कि आप एक राउंड टेबल होगा, उसमें आइए और हम लोग संविधान को स्पष्टीकरण करेंगे। और उस संविधान के स्पष्टीकरण में मैथ जी बोलेंगे, प्याखुरल जी, ये उद्धव बोलेंगे, ये कहा गया था। तो मैं सुनने आया था और यहाँ कि आपने कहा कि वो आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, तो अब आप कपास उठवा रहे हैं। देखिए, जो मेरी राय है, वॉट एवर माई ओपिनियन इज अबाउट नेपाल प्रेजेंट सिचुएशन, आई हैव नो बुकेज आइदर फॉर द नेपाल गवर्नमेंट or for the Modi government, and that is my dilemma, and that's why I get brickbats from both, but that doesn't matter. I have put in writings what my views are. The first view is that I wanted any constitution better than no constitution. We have struggled it even in our own intellectual base, even during the first Constituent Assembly, that it should have a constitution. There are several vested interests. This is not the place to go into all of them, why they did not want to have a constitution. I am very happy that Nepal has adopted a constitution. I am very happy, I have in writing complimented that Nepal constitution has distinguishing features which are unparalleled in comparison to many of the South Asian countries. It has a first time, and after 6 constitutions, first time a popularly accepted constitution, which must be welcomed by everybody. And I criticize the government of India, which only took a note of the constitution and not welcomed it. India would not have become smaller if first paragraph was to welcome that constitution. Having said that, and I endorse whatever you say, these are the positive features of the constitution. I have certain problems in my mind, and this is where I don't have bouquets even for the Nepal government. If the constitution is so well, so perfect, why the Madheshis were not taken on board in the beginning, and why they did not accept the constitutional proposals which were there? If the constitution was so perfect, why Manjushri Thapa-like people burned the constitution? Burned the constitution as a woman representative. If the constitution is so fine, why the Maoist only put a dissent and let it go forward? What are those clauses of dissent and all that? And if the constitution is so perfect, why, Mahatji, after passing the constitution, you moved the amendments? The amendments you moved, why you could not incorporate in the constitution? Half the problem would have been taken over. So it's a question of a mindset. What is bothering Madesh is not the clauses per se. You know, I have talked to many Madhesi people. I have talked to many of the mainstream political parties people. The real problem is not in clause this, clause that, word here, comma there. Many things could have been sorted out if the mindset was correct. Unfortunately, the mindset is that there is a divide between the Tarai and the hills. You like it or not. And this divide is not of last 3 months or 4 months or 8 months. This divide spans over decades and centuries.
Unfortunately, while making the constitution, while you were all had joined hands in Jan Andolan 2, the present constitutional spirit is the product of that Jan Andolan 2. Before that, nobody wanted a constitution based on constituent assembly. 1990 constitution was not based on constituent assembly. The flaws of the constitution have, I don't have to recall it to you. Please go and read Krishna Hetechu, who was a part of your constitutional process intellectually, and he has written a wonderful critique of why this constitution is not perfect. Now, if that being so, the problem lies with the mindset. And in the mindset, if you had taken the Madhesh along politically, which you did not do, half or more than half of the problem would have resolved. Unfortunately, and Nepali Congress is equally responsible, sir, for that. Unfortunately, when the agitation started, where was the need for using the force in a manner you did it? I know there is a now division between Nepali Congress and UML, and they say it was the Deputy Prime Minister, Mr. Home Minister, Bamdev Gautam, who did it this way. We did not want to do it this way. You know, these are finer questions of administration, which shows that the coalition government was not working as a homogeneous group, whatever that is. I think that infuriated the Madhesh further, I'm sorry to say. The use of force, initially. Look, at that time there was no blockade. I mean, you can blame India left, right, center, it is very good. It's a punching ball for Nepalese policy, both for domestic politics and foreign policy. And there are flaws on India's side, which I'll mention in a short while. But the fact remains that why it is that at that time, you did not think of going about there. For hours, I mean, one day, I hope there is no media. If there is media, please don't quote me on this. I mean, I had almost 3-hour-long discussion with Bamdev Gautam, and he is not willing to concede an inch that yes, there are different communities which must live together. Why it is that even Janjatis, sir, you mentioned there are many Madhesis who are in the mainstream parties. I agree with you. But you also remember that all these people had agitated and given in written reservations on the way you were proceeding with the constitution. Your friend and colleague Bimlendra Nidhi, is he happy with what you have done with the constitution? Yes, he has voted. He has voted because you told him, and you told many such others, that if you don't vote, you go out of the political system of our party. So there was a political constraint in which many of those who are in UML, in Nepali Congress, in Maoist groups have gone along with the constitution. Please don't project it, at least to an analyst, don't project this as a consent and concurrence of all these people to whatever has been done in the constitution. This is where the problem of mindset lies. So this was the one. Now why it was done? Why it was done? Largely because of political power sharing. I think the constitutional design was the 16-point agreement. Is it 16-point or 16-point agreement? 16-point or 12-point? Yes, in which you took the Tharus along and you took the Maoists along. And the Maoists said, we will go along with the constitution, but these are our principles because they have also to save their constituencies. These are our principles, but we give dissent on that and go ahead. I mean, this was a power sharing arrangement which brought about a constitutional design. And poor Tharus were dropped at the last moment when constitution was being rushed through. People like Deepak Gewali, people like, I am forgetting 3-4 other names, who have written in your Nepali media to say you rushed through the whole constitution in 7 days. And rushing through the constitution in 7 days, you cherry-picked the demands which had come from the feedback. You accepted some demands, you did not accept some demands. This is where the problem lies. So problem is not legal in terms of drafting the constitution or having the clauses or not giving the rights. I concede, I have told you this, it's a wonderful constitution, but it has certain flaws, and this is where the flaws is.
And unless you address those flaws politically, which I am afraid, why it is that the constitutional amendments proposed by you were not acceptable to Mr. Oli and his party? Will anybody answer this? Will anybody satisfy ordinary Nepalese? Even today he is not willing to go along there. Under pressure, despite the fact that the UML has entered into agreement with the Maoists and the Tharus to compromise on some of these clauses, they are not moving even after 1 month. 20th of September was the constitution amended. Today we are nearly 2 months away. What have you done on that? We are negotiating, we are talking, we are doing this, we are doing that. We all understand politics, sir. And we know how you diffuse a very critical issue in politics. Unfortunately, this is where the problem is. Now, if this is a problem, then I think you better sort out the issues politically, internally, rather than anything else. And if you are not willing to sort out issues politically, which some sections, and I am not blaming Nepali Congress alone or UML alone or Maoist alone. I think there are fissures and problems and issues and questions in all the parties. The major problem of all the parties are that they are internally fragmented. They cannot take a single opinion. Your leader takes a position, goes to the Constituent Assembly meeting, says this is what it should be, he goes back and is booed in his own party. And then he says, no. जो कुछ भी कह गया मैं जुनू सब गलत कहा. I mean, whatever you have committed, you withdraw it. It has happened time and again. It has happened with the Maoists, it has happened with the UML, it has happened with the Nepali Congress, 3 major parties. This is where the problem is. And unless you address this problem, I am afraid even if you get over the agitation, you would not be able to consolidate the constitutional gains. And I am saying positively, that you have positive constitutional gains. I can go on, but I will stop here so far as the bouquets are concerned. But I want to come to the Government of India. I think there is no harm in Government of India supporting the grievances of the people who feel marginalized, who feel dissatisfied. India, as you said in the past, often we stood up against monarchy. People said you were siding, interfering. We have been interfering all along. I remember a statement by P.N. Huxon, who was advisor to Indira Gandhi. He said, so far as neighbors are concerned, we are lodged in each other's intestines. We are already there. You like it or not. Whatever happens to you will affect us. Whatever happens to us will affect you. This bogus of interference must be thrown out of Indo-Nepal relations at least, if not on other countries. Because you have fought for our independence struggle, we will fight for the rights of the Nepalese. You like it, you don't like it. I mean, this is what the history is. This is what our culture is. So this, I'm not. Therefore, if the Government of India stands for a section, a large section of the Nepalese who feel aggrieved for right reasons or wrong, because you have failed on politics, you have failed on some other issues, there is nothing wrong in it. The problem with the Government of India lay, as I said in the beginning, that it was the first sin committed by Modi government was, and that's why Modi lost all his goodwill, and rightly so. The first sin which was committed by the Modi government was that we did not welcome the constitution. We should have welcomed the constitution, and then we should have we should have even explained the reservations, that these are the areas where you need to do this. Why it did not happen? It did not happen because of 2 reasons in my understanding. One, the question of knee-jerk reactions and egos, both at the political level as also at the bureaucratic level. And the second is the hidden agenda. The first question of political egos and knee-jerk reaction was evidently clear when Mr. Jaishankar was sent there. Now a constituent, popularly elected constituent assembly has voted for a constitution. Rushed through 3 days, 232 clauses passed in 1 day. No discussion in the constituent assembly. Don't tell us that there was a very perfect bureaucratic process which was adopted there. At least I will not accept.
Now that is what it was being done. But then, having passed the constitution, what business an Indian foreign secretary has to go there as a representative of the Prime Minister? Please don't blame Jaishankar. He did not do this on his own. He had a brief to carry out. And he went as Prime Minister's nominee. So why was Prime Minister ready to send him? At that moment was a gross diplomatic blunder India has ever committed, I would say. This was the second problem. And the third problem is the so-called, I am using the word so-called because Government of India does not, this blockade. In order to pressurize the government which is arrogant, in order to pressurize the government which was not politically sensitive to large sections of its own people, there was no need to punish an ordinary Nepali. That was the third blunder which was actually done. So there were diplomatic blunders which have been committed, there are policy blunders which are committed, for which I have openly criticized this government, and for that matter I have got a lot of bouquets. They have blacklisted me on some of the official TV channels and news channels. Good enough, no problem. It doesn't restrain me. The Congress government called me a Maoist because I was supporting the mainstreaming of the Maoists. So I have got from both of them whatever it is. Anyway, what I said, the second real major problem was the hidden agenda. The hidden agenda was to convert you into a Hindu state. The hidden agenda was to get secularism term removed from your constitution. And this is not because of RSS alone. This is not because of Vishwa Hindu Parishad or sections of the BJP. It involves the Prime Minister himself. And it involves the Prime Minister himself from the day one, from his first visit to Nepal. Please read his statements. You were all very gadgad when he came. The one word he did not use was secularism. He gave all qualifications of the constitution. It should be republican, it should be federal, it should be inclusive, not secular. Therefore, he gave his message. He was honest enough to give you his message from the day go that I don't want. And then some of your leaders, your Deobaji, your Prachandji, they were all invited here. The UML representative, who came as Hemali, they were all told, not publicly, in the dinners, in meetings with the ministers, Hindu state बनाइए, secularism हटाइए. आपने चालाकी की, आपने क्या चालाकी की? आपको लगा कि हिंदुस्तान के दो एजेंडा है. एक एजेंडा तो है कि माइनॉरिटीज और मदेशीज को साथ लीजिए, दूसरा एजेंडा है कि हिंदू बनाइए. तो आपने दूसरे एजेंडा पे कंप्रोमाइज किया. आपने सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन लगा के सेक्युलरिज्म का मिन्स्ड मीट बनाया. What is the meaning of your secularism clause? Please tell me. Explain it to me. What is the meaning of it? Therefore, you did. कान को आपने घुमा के पकड़ा, सीधा नहीं पकड़ा. मोदी जी नाराज हैं कि आपने कान सीधा नहीं पकड़ा. आपने हिंदू राज्य नहीं बनाया और आपने सेक्युलरिज्म हटाया नहीं, लेकिन आपने गौ माता को नेशनल एनिमल बना दिया. पहले से था. ठीक है, कंटिन्यू किया. नहीं, पहले से था. उसकी वजह बताऊं मैं आपको, उसकी कहानी बताऊं. सुन लीजिए. अब अगर आपने, क्योंकि एम्बेसडर साहब ने सवाल उठाया, जब बताना पड़ेगा. जीपी कोयराला जब पहली विजिट पे यहाँ आए थे तो एडवाणी जी मिले उनसे, और फॉर्चुनेटली फॉर मी, I met GP. I was listed to meet GP Koirala two other meetings after Advani. So Girija Babu told this to me, that Advani has only one message to convey, कि गौ हत्या बंद करवाइए. And therefore GP Koirala had argued and argued with Prachanda to say, भाई ये तो मान लीजिए आप. इसलिए इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया. उसका डिफेंस मत करिए अभी यहाँ पर. इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ के कुछ लोग, आपने कमल थापा को, इन लोगों ने, आई मीन जो हिंदू सेक्शंस है हमारे, कमल थापा को एनकरेज किया कि मोबिलाइज करे सारे नेपाल में हिंदू राज्य के फेवर में और मोनार्की के फेवर में.
आप मत मानिए, हमारे पास भी एविडेंस है बहन जी। यहाँ से पता नहीं, हमने नहीं किया। मैं यहाँ से कह रहा, आपको कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ यहाँ से जो सेक्शंस हिंदू को मोबिलाइज, उसने रथ पे रथ निकाले वहां। Therefore, this second agenda was much more clear to Mr. Modi, and he found that because of the Maoists or because of the communists, the second agenda was distorted totally. It was not accepted in the manner, and he thought he has an answer. He has to answer to his party establishment से क्यों हिंदू में, क्यों नेपाल में हिंदू राज्य नहीं बना पाया, जबकि इतनी सारी मेजोरिटी है। आज भी in my understanding, BJP has not given up on the agenda of a Hindu state in Nepal. You like it or you don't like it. Therefore, I find there are problems on both the sides. If you want to resolve the problem, please move politically. If you want to resolve the problem, please get the constitutional amendments pushed in by you, adopted as fast as you can through the fast track which you did for the whole constitution. Why are you not doing it? If you want to resolve the problem, take the Madeshis on board. कंधे पे हाथ रख के कहिए, आओ भाई बात करते हैं, खाना खाते हैं साथ में. Don't foo-foo them. Don't say dhoti. Don't demean them. You have been demeaning them. Your media has been. You means not you, Miss Dr. Meher. You means the media. Please, you want me to show you the publications of Nepal? You want me to show the tweeters which I get from the Nepalese? Please accept. Don't be in a denial mode. It is a fact. It is a hard, unpleasant fact which has got to be faced. And therefore you do it. Move the constitution. Get it adopted. You will have won more than half the battle. And so far as Indian government is concerned, I would say this blockade doesn't make sense to me at all. It's now a question of ego. पहले कौन झुकेगा? आप भी उसी में बैठे हैं. आप मीन्स आपकी सरकार. आप भी उसी में बैठे हैं. दिल्ली भी उसी में बैठी है. उसी में बैठे रहना है तो बैठे रहिए. लोगों का सत्यानाश हो. Thank you. Thank you, Professor Modi, for your insights. And I think Professor Chenna, you want to say something, and he's. Unfortunately, I have to go to the idiot box, TV. Because of attacks over Tipu Sultan's anniversary. This is India now. The first thing I'd like to say, and I've said it in primetime TV, that even after 100 amendments, the Indian constitution is not as progressive, particularly in terms of fundamental rights, rights of minorities, rights of women, as the Nepalese constitution. Though I also feel that some of the changes made in the interim constitution have created problems. Professor Muni has spoken on that, so I won't say any more. About this proportional representation, in India we have had governments with votes from 29% to 35% of the electorate as national governments. So the direct past the post system is not as representative as the proportional system. Secondly, there are coalitions in every party. Every party has a left, has a right, has a center, including the communist parties, including the centrist parties, including the regional parties. So proportional representation is not going to make it more difficult to rule. And I think the reduction of proportional representation from the interim constitution to the final constitution is something you might consider. But I would like to say very strongly about Comrade Oli and this Article 283, this constitutional rights, constitutional posts being decided by dissent is something not even the United States does, though it says that the president should be an American. Barack Obama's father is not an American citizen, yet he's president of the United States. So, and especially when Comrade Oli backs this article so strongly, I feel I must reread Marxism and understand what he is saying in an adequate way. But Since Professor Muni has dealt with the Constitution in some detail,
I would like to talk about the Indian role, which I think has been incompletely described. Number one, the Indian attack on the Constitution, criticism on the Constitution, was done in a newspaper called the Indian Express. And at that stage, none of us had the English copy of the Constitution. But it was in English criticism, 7 points. When you deal with a friendly neighbor about a critical situation like the Constitution, you have closed-door meetings and you make your propositions. You don't have a discussion by press. So it's not only that Jai was sent late, even the discussion between Sushil Koirala and the PM was on August 25th. This is a process that should have been done much earlier, should have been done behind closed doors and worked out. So the Indian position has been extremely questionable from the beginning. Then the blockade. Now I have lots of friends and some now MLAs from Bihar, and it was clear that the Indian government was supporting fully the blockade. It was not only about Nepal, it was of getting people, Indians in the Terai area, to support the BJP Gathbandhan rather than the secular Mahagathbandhan. So it was linked to Indian politics. And of course it was also to put pressure on Nepal. But India didn't stop at that. In the UN Human Rights Council, India moved a resolution against Nepal and said that there was a dictatorial constitution, that 45 people had been killed by the state in agitations, and human rights were being violated on a large scale. Now, India has criticized governments before, but never in its name. It's got another government to do it. But here India did it itself. So clearly, what India has done, and there are various examples that can be given, is not the act of a friendly neighbor who has a special relationship with Nepal. As far as the Madhesh is concerned, yes, there should be discussions. I agree fully with Professor Muni, but one caveat. The Indian government should keep out. Because the Indian government now will not be trusted by a lot of the Nepalese politicians. So in India's own favor to get a solution of Madhesh in a democratic way, it can be done, and you should put it on fast track. You have almost 3 years. You should do it. And I must say again, we have no doubt, many of us, that the Nepali constitution, even as it is now, which we have some objections to, is superior to our constitution, which we've amended 100 times. So when Professor Muni talks of South Asia, it's from India onwards to a number of other countries. And Latin American delegates have spoken in this room. And in passing said, yes, the Nepalese constitution is good. But what happens is that sometimes better becomes the enemy of good. So why give this proportional representation? Why agree to changes of boundaries? Why remove some articles? Why, after all, there are other Janjatis, Tharus, women, etc. That you people, no one knows better than you. In doing so many constitutions in different political situations, you know what you have to do. And I think Professor Muni is quite right. In these kind of negotiations, symbolism is very important. And you have to have heavyweights there, and you have to clear the ground. So that Indian intervention, for reasons that he said, but of course it's also Gao and no, secularism is also that Bharat Mata ki jai. That there should be an underling to us, a kind of Bhutan say. So for this, it is very important that the democratic forces in both countries interact. More important than the political forces interacting. And I think also simply written books
which argue about the constitution and dispel misrepresentations of the constitutions and supposed weaknesses would not be a bad idea, especially if apart from English they're published in Hindi and other languages. The last point I'd like to say is that the constitution is not only the rule for Nepal. In Bhutan, in parts of other parts of South Asia and Southeast Asia, people are going to look at the Nepali constitution and from there see if they can learn something. That will also include your political clout and your acceptability in this kind of situation. So I don't think now the Bihar elections are over, I think this is the time to move. Modi has nothing more to get. Last point I'd like to make is about the cow. Now in the Indian constitution we have two kinds of rights: fundamental rights and directive principles. Directive principles cannot be imposed, only can be used to strengthen a fundamental right. Now in the Constituent Assembly, a religious defense of a right was made, rejected by Ambedkar and Nehru. And so the ban on cow slaughter in the constitution is to improve and preserve the breeds, which India has failed to do, of course. Brazil, which has imported old Indian breeds, has more Indian breeds now, including despite cow slaughter, than India has. But the whole idea of that Article 48, and mind the way, it says all milch and draft cattle also. So it includes the buffalo, it includes the mithun, it includes the yak. So it's not about just cow slaughter. But unfortunately, we secularists have been weak in defending our constitution and that right. So, it's become Gau Mata. And Gau Mata for some is more important than Bharat Mata. So I think you must see what the, within quotes, Indian reaction is, looking, as Professor Muni has pointed out, at the role of the RSS, who, by the way, luckily spoke out in the Bihar election, so the secular forces won quite easily. Now the main thing should be that the civil societies of both our countries should work on removing confusions, removing differences, solving dissent. We should then act as levers on our own government. Thank you. एक सेंटेंस बोलना है, क्योंकि महत जी ने मुझे रोका था बीच में कि माइंडसेट में कोई खराबी नहीं है. आपके प्रधानमंत्री का एक कोटेशन मुझे याद आ गया. 5 मिनट बोल सकते. नहीं, 1 मिनट बोलो. प्रधानमंत्री जी का कोटेशन याद आ गया. जब मदेश में ह्यूमन चेन बना था तो किसी ने उनसे कहा कि मदेशियों ने ह्यूमन चेन बनाया है. उन्होंने कहा दिस इज अ चेन ऑफ फ्लाइज, मक्खियां हैं ये. बोली तो सारे नेपाल के माइंडसेट रिप्रेजेंट नहीं करते. आपकी सरकार थी, वो आप प्रधानमंत्री, एट दैट टाइम यू आर आपकी सरकार में शामिल थे. ओली व्यक्तिगत रूप से नहीं थे, लेकिन पार्टी थी सारी. सर वो फ्लाइज इज बेटर देन डॉग्स. He's a prime minister now. You can't disown him, sir. That is what I said. You can't disown him. Please don't do that. Thank you, sir. Thank you. And I think we should go for. We disagree. I can say we disagree. नहीं, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब कुछ कमेंट करना है कि जो मतलब जो स्पीड यू आर ऑनर्ड गेस्ट, पूरे डिस्कोर्स में कहीं उसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन या जो जिन्होंने नहीं कहा अप्लाइज, जैसे और क्या कहा, छलनाथ खनाल ने कहा ये धोती है, धोती प्रदेश है. आम बच्चे जो आप ही के हमारे आपके भतीजे मेरे साथ काम करते हैं, वो कहते हैं कि हमको स्कूल में यही दिखाया जाता था. हमने सेडेड में ही आके समझाया कि मदेश आर इक्वल नेपालीज, हमको धोती धोती कह के हम वो करते थे. तो जो इस तरह से जो कंटेम्प्ट, इंडिफरेंस और इग्नोरेंस है अबाउट मदेशीज,
नेपाल के काठमांडू एलिट में, वो तो ऑब्वियस है ना। और उसको लेके कोई कल्चरल मूवमेंट, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट, कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं दिखता। तो ये बात मेरे ख्याल एसटी मुनि कह रहे हैं, और मैंने खुद भी ये एनकाउंटर किया इस तरह का। अभी भी देखिए ना कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म पे तमाम हिंदूज, मंडल और रिजर्वेशन के पक्ष में तमाम ब्राह्मण्स, राजपूत सब लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मधेश का क्या केस है इसके बारे में नॉन मधेसी, लेट्स काउंट, इट वोंट एक्सीड इट इवन वन फिंगर्स ऑन ए हैंड। जो नॉन मधेसी 1% भी नहीं होगा काठमांडू एलिट में आप गिन लीजिए कौन है जो मधेसी, डिसएग्रीमेंट हो 100%, लेकिन कहे कि भाई मधेसी ये केस है। जितने प्रेजेंटेशन होते हैं वो कैसे मधेसी केस बोगस है, ये लोग फालतू में लड़ रहे हैं और ये लोग हिंदुस्तान के भड़काने पे ही लड़ते हैं। आपके तमाम एक्स प्राइम मिनिस्टर घुसते ही, एज सून एज यू एंटर देयर ड्राइंग रूम, वो कहते हैं अरे इस बार क्या करवा रहा है साउथ ब्लॉक मधेश में, कब तक करवाएगा ये आंदोलन। दिस इज हाउ ऑल योर एक्स प्राइम मिनिस्टर्स बिहेव। तो इसलिए इसको कोई एड्रेस अगर नहीं करेगा तो फिर ये आंदोलन, एजिटेशन खत्म हो जाएगा। इंडिया की ओर से यूनिलैटरल ब्रेक, अभी फोन जब आप अभी शुरू भी नहीं हुई थी मीटिंग, तो स्वराज अभियान के ये संयोजक हैं योगेंद्र यादव, उनका फोन आया कि हम यहाँ से सिग्नेचर शुरू करें कि ब्लॉकेट खत्म होना चाहिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो नेपाल की सिचुएशन है, हाउ विल दैट सिग्नेचर campaign? The ball is in the court of Mr. नरेंद्र मोदी and Mr. ओली। बाकी हम सब लोग तो अपने मानसिक शांति के लिए ये सब बात कर रहे हैं। और जिस तरह से ओली जी का जो व्यवहार है अभी, मतलब आप जानते हैं कि ओली आपसे ज्यादा मीटिंग, मैं हूँ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, लेकिन 90% ऑफ मीटिंग्स आई हैव ऑर्गेनाइज्ड इज ऑफ ओलीज। ओली जी आपसे ज्यादा बार मेरे घर विजिट किए, हमारे पॉलिटिकल ग्रुप में किए, हमारे ऑफिसेज में आए। लेकिन अभी जिस तरह से ही इज अलाउइंग दिस पोलराइजेशन, दिस इज वेरी फ्राइटनिंग, and Indian relationship between Indian people and Nepali people will never be the same, because in modern times these are the nation state entities which determine people to people relationship, and the relationship with Nepal will always is going to be problematic. And third conclusion, which I have not said before, other things I have been saying, is that if non-Madhesis don't take up the cause of Madhesis and explain to them, convince them, bring them on board, then the radicalization of Madhes will be a serious problem. Lot of things which you are conceding are not always very good. With the Madhes things also, you are conceding, India कह रहा है, मधेश कह रहा है, इसलिए अच्छा ये भी कर देते हैं। Like this inclusive के आगे proportional का जो prefix कह रहे हैं ये लोग, वो कुछ नहीं, इनके शेखर कोइराला ने रेजोल्यूशन मूव किया कि सेकुलरिज्म हटा दीजिए। हाँ exactly, नहीं वो तो आप बात ज्यादा नहीं खोलनी चाहिए। कितना रद्दी हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। हिंदू राष्ट्र जो है वो नेपाली पीपल वर रेडी। अगर नरेंद्र मोदी ने ना किया होता तो इससे जो कंटेंट है पूरा लिख दिया, गौ हत्या नहीं होगी, कन्वर्शन नहीं होगा, सनातन धर्म की रक्षा नेपाली स्टेट करेगा। What more is हिंदू राष्ट्र? धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, सनातन धर्म, धर्म नहीं किया, सनातन धर्म और संस्कृति का रक्षा नेपाली स्टेट करेगा। तो पूरा कंटेंट जो है हिंदू राष्ट्र का लिख दिया, पर एक सेकुलर शब्द, और वो सेकुलर शब्द इसलिए नहीं लिखा कि सेकुलरिज्म का तुम्हें किसको नहीं बोले, ये तो इनको तो बहुत समय से कह रहा हूँ। आप कहिए, आपको नहीं अभी गुरुजी आप जाइएगा नहीं, अभी आप प्लीज जाइएगा, अभी आप बैठे रहिए। हाँ। जयराम को बोलना है, अभी एम्बेसडर साहब को बोलना है, जयराम जी को बोलना है और अध्यक्ष महोदय को बोलना है। तो मैं अपनी बात अभी यहीं खत्म कर रहा हूँ। हम लोग सब चल के चाय पिए। बोलना चाहते हैं, उनको भी बोलने का मौका। हाँ सब बोलने का पर्याप्त मौका है। चाय पी के आएंगे
और फिर चाय से ही दोबारा खत्म करेंगे। नीचे चाय है, हम सब लोग चलें चाय पिए, उसके बाद आगे। और एम्बेसडर साहब आप बात रखना चाहेंगे पहले? अब हम तो अंतिम में रहेंगे। आप अंतिम में? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जयराम जी पॉपुलर दीवान है आपको। चाय से पहले कुछ कह दो यार। मुझे मैं तो सुनने आया हूँ, तो सभी आए हैं। सुनने आया लेकिन हूँ। चाय के बाद आप रुक सुनने के बाद कमेंट सुनना चाहिए। नहीं, मैं सुनने के बाद मैं आप लोगों को सुनने आया हूँ और सीखने भी आया हूँ। और एक दो बातें जो है पिछले कुछ महीने में देखने को मिला है कि मैं मुन्नी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैंने भी हमारे पार्टी के अंदर के फोरम में कहा था कि हमको पहला शब्द हमें इस्तेमाल करना चाहिए था कि हम इस संविधान का स्वागत करते हैं। परंतु ये आपत्तियां हैं हमारी, एक दो वही 7 पॉइंट जो इंडियन एक्सप्रेस को दिया गया था, आप उसमें लिख सकते थे, पर पहला शब्द, पहला वाक्य होना चाहिए था कि हम संविधान का स्वागत करते हैं, परंतु कुछ खामियां हैं और हमारे अनुभव के आधार पर हम पड़ोसी देश को ये सुझाव देना चाहते हैं। ये होना चाहिए था हमारे ओर से पहला कदम। दूसरी बात जो मैंने कही कि हमेशा जब समस्याएं आई हैं नेपाल और भारत के बीच में, पॉलिटिकल इंटरलॉक्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है पहले से। पॉलिटिकल माने नॉन ऑफिशियल इंटरलॉक्यूटर, उसमें पॉलिटिशियंस भी जुड़े हैं, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति भी मिले। इस बार सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी का इस्तेमाल किया, और वो भी फॉरेन सेक्रेटरी नॉट एज फॉरेन सेक्रेटरी बट एज डेजिग्नेटेड स्पेशल एनवॉय ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ हमारे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में व्यक्तियों की कमी नहीं है जो नेपाल जाते हैं, जिनके ताल्लुकात सभी पार्टियों के साथ है। मैंने मुन्नी साहब, मैंने आपका नाम भी लिया था, मैंने कहा आपको आपत्ति है पार्टियों से तो आप बाहर जा सकते हैं, मुन्नी साहब जैसे लोग हैं। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, शरद यादव जी हैं, सीताराम येचुरी हैं, डीपी त्रिपाठी साहब हैं, कई लोग हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। और आखिरी वक्त पर सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी का इस्तेमाल किया गया, वो भी एक डिमार्च के रूप में, और मैं समझता हूँ वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव। तीसरी बात, इसमें बिहार के चुनाव का हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये भी सही है कि जो बैकग्राउंड था, पृष्ठभूमि था, बिहार का चुनाव था, और आरएसएस, अमित शाह, मोदी सब लोग चाहते थे कि एक हम बड़ा पावरफुल तगड़ा सिग्नल भेजें कि हम मधेशियों के साथ हैं, मधेशी पार्टियों के साथ हैं, और नतीजा वही हुआ जो हमें देखने को मिला। मैं बिल्कुल सहमत हूं मोनी जी से कि बड़प्पन नेपाली एलीट ने नहीं दिखाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाते वक्त अगर आप ग्रैनविल ऑस्टिन का किताब पढ़ें तो ग्रैनविल ऑस्टिन लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बिना ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। मैं कांग्रेस पार्टी की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूं, पर कांग्रेस पार्टी में एक ओलिगार्की था, वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है ग्रैनविल ऑस्टिन ने कि कांग्रेस पार्टी के ओलिगार्की के बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं पाता। और ओलिगार्की के 4 व्यक्ति थे, नेहरू, पटेल, आजाद और प्रसाद। और ऑस्टिन किताब लिखे हैं, नो अंबेडकर वाज अ ड्राफ्ट्समैन ऑफ, अंबेडकर वाज नॉट अ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और ग्रैनविल ऑस्टिन लिखते हैं कि हर एक आर्टिकल, ड्राफ्ट आर्टिकल कांग्रेस पार्टी के फोरम में डिस्कस हुआ करता था, और अगर इन 4 में से एक व्यक्ति ने हाँ कह दिया या ना कह दिया, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वही हुआ करता था। और जो मुनी साहब ने कहा है बिल्कुल
इसको हम इसका खंडन कोई नहीं कर सकता कि जब तक रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, जब तक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बड़प्पन नहीं दिखाता है इंक्लूसिवनेस के लिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते जो सभी को सेटिस्फाई कर सकता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबी है कि पॉलिटिकल एलिट ने अपने राइट्स को उन्होंने त्याग कर दिया। आज कहना बड़ा आसान है, पर उस वक्त देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक अपर कास्ट असेंबली हुआ था, नैरोली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुश्किल से 8 या 10% इंडियन इलेक्टोरेट था 1946 में, इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया। पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसे इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो एक अमेंडमेंट देने से कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहते थे आप कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर सकते थे, और ये जो आशंकाएं हैं ये दूर कर सकते थे। और पॉपुलेशन ही जनरली एक्सेप्टेड आधार है रिप्रेजेंटेशन का, उससे तो हम हट नहीं सकते। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिकन सिस्टम में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पॉपुलेशन के आधार पर है, पर यूएस सेनेट पॉपुलेशन के आधार पर नहीं है। यूएस सेनेट में हर एक स्टेट को 2 रिप्रेजेंटेटिव है, पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पॉपुलेशन के आधार पर बनाया गया। पर वो यूएस सिस्टम बिल्कुल अलग है। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के आधार पर चल रहे हैं। तो आप कैसे पॉपुलेशन का नजरअंदाज कर सकते हैं? पॉपुलेशन का बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो आधार पहले से ही होना चाहिए था, और अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं तो जैसा मोदी साहब ने कहा है, उसको जल्द से जल्द आपको अमेंडमेंट से बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करना जरूरी है, क्योंकि ताकि लोगों का विश्वास बढ़े कि ये अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पक्ष में है। मैं इस विचार का हूँ कि ये जो डायलॉग है नेपाल के अंदर होना चाहिए, हमारे थ्रू नहीं होना चाहिए। मधेशी और नेपाली रूलिंग क्लास, मधेशी और नेपाली रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के बीच में होना चाहिए। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कहूँगा, साउथ एशियन रीजन में हमारी एजेंसियों का रोल बड़ा खतरनाक रहा है। पॉलिटिकल रोल हमें चाहिए, पॉलिटिकल क्लास, जो मुनी साहब ने कहा ना कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, और वो पॉलिटिकल डायलॉग नेपाल के अंदर होना चाहिए, मधेशी और सभी पार्टियों के बीच में पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पॉलिटिकल डायलॉग हुआ करता था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर डायलॉग हुआ करता था, और गिव एंड टेक, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़े, गिव एंड टेक होता है, कॉम्प्रोमाइज हुआ करता था। भयंकर कॉम्प्रोमाइज हुआ है। नेहरू जी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, पटेल ने कॉम्प्रोमाइज किया है, अंबेडकर ने कॉम्प्रोमाइज किया है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट देखें तो ये डायलॉग ये अंदर नेपाल के अंदर होना चाहिए, नेपाल की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में होना चाहिए। और इसमें जो हमारा अनुभव रहा है हम आपको दे सकते हैं, पर हम पर निर्भर करना और हमको चैनल के रूप में और या इंटरलोक्यूटर के रूप में हमको देखना, ये मेरे विचार में ना हमारे लिए अच्छा है ना आपके लिए भी अच्छा है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री होने के नाते और एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, और कहा जाता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का थिंक टैंक का सदस्य भी हूँ, और आजकल अभी तक मैंने वो थिंक टैंक भी देखा नहीं है, अगर है मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्वागत करता हूँ। बड़े सालों के बाद, बड़े मुश्किल के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है। No constitution is better. Imperfect constitution is better than no constitution. I entirely 1000% agree with Professor. It is a starting point. So जल्द से जल्द आप इसकी खामियां जो हैं, perceptions जो हैं, इसको एड्रेस कीजिए, और
हम भी यही भुगत रहे हैं जो आप भुगत रहे हैं। पॉलिटिक्स में भाषा बड़ा महत्व रखता है, एक्शन कम और भाषा ज्यादा। तो बोली जो इस्तेमाल होती है वो ज्यादा घाव पहुंचाती है एक्शन से भी ज्यादा। एक मिनट, बोली जो है ना, एक मिनट, एक बोली जो है ना, अगर ये बोली से आप एक डायलॉग का वातावरण नहीं क्रिएट करेंगे तो ये आप इसको आगे नहीं ले चलेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली भी कहा है कि इंडिया एंड नेपाल हैव अ हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप। We have a political relationship, we have a close economic relationship. It is in our interests to see a strong, democratic, secular Nepal, and we will work with all other political parties in India to ensure that this objective is fulfilled. मैं सोच रहा था डॉक्टर साहब को जो चीज जानकारी नहीं था दे दूं प्लीज, क्योंकि उन्होंने जैसे एक सेकंड पॉलिटिकल आइटम सुने, एक जब जो चीज नहीं अगर आपके नॉलेज में तो ले लेना ठीक है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट जयशंकर जी का है। 7 सितंबर को मैं खुद गया हूँ, मैं चंद्रशेखर जी के साथ पॉलिटिकल लाइफ बिताया हूँ। मैं केपी शर्मा ओली जी को मिला, 2 घंटा 9 बजे से लेके 11 बजे तक हमारी बीच में लंबी बात हो रही थी जो चल रहा था मधेसियों का मूवमेंट। फिर मैंने भारत के की ऑफ द पॉइंट से दोनों आदमी की बात कराया है, दोनों आदमी लंबी बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रहा था। फिर डिसाइड हुआ ओके हम डिले थोड़ा करेंगे, उनको मधेसियों के साथ 2 दिन डिले करने की बात थी। उन्होंने जहाज का टिकट बनाया प्रदीप गेवाली का, युवराज का और हमारा तीनों का। हम लोग आकर के यहाँ संबंधित से मिल करके फिर जाने वाले थे, 1 सप्ताह डिले करने की बात थी। बृहस्पति की बात है, शुक्र और शनिचर 2 दिन था मधेसियों के डिबेट के लिए। संडे को इन लोगों ने संविधान पेल दिया पास करने के बाद। ऐसा नहीं था कि इधर से चाहे पॉलिटिकल कहें आप, चाहे जैसे आपने कुछ फेमस नाम कहा, हो सकता है फेमस नाम नहीं पाल की, क्योंकि आजकल चंद्रशेखर जी तो फेमस नहीं है या उनके लोग भी फेमस नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम भी विगत 5 वर्षों से नेपाल के बिंदुओं पे आपस में एक सुलह समझौता वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की है। आपके पार्टी के हमारे डायरेक्टर साहब भी एक समय गए थे। मैं बहुत दिन से कोशिश किया हूँ, जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी में थी तब भी एक मेल मिलाप, सद्भाव, यूनिटी जैसे भी हो नेपाल के वातावरण को सुलझना चाहिए। 1990 में आपने एक संविधान लिया, बहुदलीय प्रजातंत्र लाया और डिजॉल्व करके आप नया एक्सपेरिमेंट में भी गए। इस तरह का हमारे बीच भी प्रयास रहा है। इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी पर या हुकूमत पर थोड़ा सा कमेंट हुआ बिहार इलेक्शन से, मैं पार्टी के अधिकारिक तौर पे तो नहीं, लेकिन मुझे जो कुछ चीज लगा, जब कभी भी जनता डिसाइड बहुत मामले में करती है, जनता बहुत मामले में लोगों की गलतफहमी दूर कर देती है। नेबरिंग कंट्री है, राज्य है बिहार वगैरह जो भी है, उसमें कारणों से कोई फर्क नहीं है कि मधेश के साथ रहा इसलिए उनको लॉस हुआ या नहीं हुआ, उसको पॉलिटिकल चीजें हैं, वो हमारे आपके बीच के अंदरूनी बातें हैं। इन लोगों से रिलेटेड हो गई आपकी बात आ गई। अब हम लोग सब चाय पियेंगे और फिर मेरा आग्रह है प्रोफेसर मुन्नी से भी कि वो रुक सकेंगे तो अच्छा होगा, और एम्बेसडर साहब और त्रिपाठी जी की भी तो बात सुननी है आपको। रूल बदलाइए, मेंबर आप हैं।